Students, in this video we're going to talk about the drawbacks that hill climbing has, that it wasn't making these downward steps जो कि उसको help out कर सकते हैं escape करने की local maxima को, and then we're going to develop and we're going to talk about another algorithms, couple of algorithms जो कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं. तो okay, let's suppose ना कि why this is a problem. Let's develop an intuition कि why going downwards is a problem. Let's suppose ना कि you have an agent, you have to go to this goal, and the goodness of this goal is determined by this objective function, which is the Euclidean distance. Okay, so you are measuring the straight line distance between the agent and the goal, and you want to minimize distance as soon as possible. And the idea is that जब distance zero हो जाएगा, then you will be at your goal position. Okay, so you take a step forward in the direction of the Euclidean distance, and you take another step forward, but you hit a wall. Now distance ये बता रहा है जनाब के distance is minimized when you go through the wall, but you cannot go through the wall. And if you want to go to the goal, then you have to take a longer route, which is against the intention that you had, that you always have to follow the shortest distance as described by the intention. So you have to take this longer steps. You have to take this longer steps against you have to take these bad moves according to your equal distance to reach the goal. And this is the general idea that's encapsulated in the algorithm that we're going to see next, which is called the simulated annealing. Okay. Now why simulated annealing is so good is the fact, Janab. And so before I start by discussing why simultaneous learning is good or bad, so let me start by telling you about what is annealing. So again, in computer science, you will often see कि जनाब कि we take inspiration from the physical world to develop algorithms जो कि computers के अंदर जाके हम हमारी इंटेंशन ये होती है जनाब कि जब एक नेचर के अंदर कोई एक solution exist करता है, तो हम उसी नेचर के सॉल्यूशन को यूज करें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो एनीलिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस. एनीलिंग इज द प्रोसेस दैट यू परफॉर्म व्हेन यू आर लुकिंग टू हार्डन अ मेटल. तो मेटल मेटल को हार्डन कैसे करते हैं जनाब? तो बेसिकली आप करते क्या है जनाब, यू टेक इट टू अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर and then you gradually cool it down until they achieve a stable state. तो basically temperature heat को provide करने का फायदा क्या है? So why are you providing heat is because why are you providing heat? Because जब आप heat provide करेंगे तो इसके जो molecules हैं they will start vibrating, and when they will start vibrating then they are going to bounce off each other, and when you start cooling them off gradually, तो होता है जनाब कि वो बहुत तेजी से शेक वायलेंटली जो है वो भी शेक कर रहे होते हैं. When you start cooling them out, तो वो होता है जनाब कि वो आहिस्ता 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 एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टेट में आ जाता है. And we know, again I'm not going to talk in detail about physics of thing, but we know कि जनाब जब हमारे पास एक एक जब आइटम्स बहुत क्लोज होते हैं देन दिस इज द स्टेट दैट वी वांट टू बी इन, एंड दिस इज द स्टेट जहाँ पे हमारे तमाम हमारे जितनी क्लोज हमारे आइटम्स हैं उतना हार्ड एंड हमारा मेटल. दिस इज द जनरल आइडिया, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट वी गोइंग टू यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम. तो अगेन वी कैन नॉट पुट so we cannot put our computer on fire to provide heat. So basically we are going to what we're going to do is to use a, a, a variable that will represent heat and then try to find a solution. And this is the main thing is कि जनाब जब मैं कूल डाउन कर रहा हूँगा तो जब जब मेरे पास मेरे एटम के अंदर ज़्यादा हीट होगी तो वो मे भी हो सकता है किसी गलत स्टेट में जाकर बैठ जाए. Because the heat is high, then there's a high chance that they will escape that heat and go to a better position. Okay, this is the general idea behind simulated annealing. So what we do, we allow the bad moves as well. Okay, जैसे हिल क्लाइंबिंग से अच्छी मूव्स अलाउ करता है जहाँ पे करंट स्टेट की वैल्यू स्ट्रिक्टली कम होती थी नेबरिंग स्टेट की वैल्यू से. सिमुलेटेड एनीलिंग क्या करेगा जनाब, इट विल अलाउ यू टू हैव दीज बैड मूव्स एज वेल, बट हमेशा नहीं. They will allow you to have these bad moves with the probability. और probability क्या होगी? That probability is going to be dependent upon the temperature. जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा then the probability of accepting a bad move जो है वो भी ज़्यादा होगी. And when the temperature is going to be low, then the probability of accepting a bad move is also going to be low. Let's see what does it entails. ठीक है. So let's take an example of a ping pong ball. So again, if you have this kind of surface, let's suppose कि आप चांद पे इस तरह की surface है. So uh, if you want this ping pong ball to be at the best position, what will happen
कि you will have it bounce. ठीक है, so sometimes it will go down, but if it's bouncing, then there's a high chance it will escape this position. If it's stuck in this position, and if it's bouncing, then high chance it will escape this position, and then it will keep on doing this so until it's converges to a position जो कि उसके लिए ऑप्टिमल जो है वो कंसिडर करी जा ऑप्टिमल जो है वो कंसिडर करी जा सकती है. ठीक है, तो the algorithm is in front of you, and I want you to go through this algorithm. Again याद रखिए जनाब कि कुछ objective functions are going to be want you to minimize the value, जैसे कि आपने देखा number of attacking queens को जनाब हम minimize करना चाहते हैं, but there will be time when you want to maximize the value, जैसे कि you want to maximize profit for example. ठीक है, you want to maximize the you want to minimize the cost but you want to minimize the profits, सही है. So sometimes the problem is for maximums and sometimes the problem is for minimums. So again it's the same thing by the way. For अगर problem maximum भी है, किसी को maximize करूंगा तो फिर negative होगा, मैं minimize करूँ then it's the same thing. सही है, तो अगर किसी वैल्यू को मैं maximize करना चाह रहा हूँ तो उसकी वैल्यू उसकी negative होगा मैंने minimize कर then it's the same thing. ठीक है, so this is what we're going to work with. So let's suppose हमारी प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन की है, तो वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू दैट इज द मिनिमम. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम, एंड जैसे मैंने बताया जना कि वी विल हैव अ टेम्परेचर वेरिएबल एंड देन वी गोइंग टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर बाय सम schedule, and the schedule is basically given to us by as a parameter to the simultaneous link algorithm. Okay, so basically हमारे पास करंट नोड होगी जो कि हम क्रिएट कर लेंगे, करंट नोड, एंड वी गोइंग टू हैव द नेक्स्ट नोड व्हिच इज गोइंग टू बी नेबर एंड द टेम्परेचर वैल्यू. ठीक है, आईडी को जिस तरह से जनाब की वी गोइंग टू मेक द करंट स्टेट and then we going to run this algorithm for a number of steps. So these steps could be controlled or it could be infinite, जो भी आप करना चाहें. So let's suppose जनाब कि अगर हम टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं, let's suppose कि एक वैल्यू 100 से, and the schedule is going to be the multiplier that is going to basically schedule आपने कहा जनाब मेरा schedule जो है वो है 0.99. So every time step I'm going to multiply any value that is less than 1 or greater than equal to 10. I'm going to multiply the temperature by the schedule. And you will see जनाब के this could impact कि जनाब के temperature की value जो है आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, if temperature equal to 0 यानी कि जहाँ पे आप बिल्कुल 0 पे पहुंच चुके हैं, then you will return the state that you are in. जो current state है वहाँ पे रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज आप क्या करेंगे जनाब के you will select a next state randomly. आप एक नेबरिंग सेट बनाएंगे जनाब by choosing by choosing a value from the current state in a random fashion. Okay, and then you will calculate delta between the next value and the current value. If this delta is positive, that would mean जनाब के जो नेबरिंग सेट है वो बेहतर है. If delta is positive, then you are always going to accept the next value. तो आपकी करंट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी अगर डेल्टा पॉजिटिव है. दिस इज द हिल क्लाइंबिंग स्टेप, दिस इज द ग्रीडी स्टेप. ठीक है, दिस इज द ग्रीडी स्टेप जो हिल क्लाइंबिंग में भी हम कर रहे थे ना, जाके अगर हमारा नेबरिंग स्टेट हमारी करंट वैल्यू से बेहतर है देन वी आर ऑलवेज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग. ओके, otherwise now this is where the difference is. You're going to calculate, you're going to also accept, you maybe also accept the first state. डेल्टा का नेगेटिव है, दैट मीन के नाम नेक्स्ट स्टेट खराब है, करंट स्टेट बेहतर है, बट यू ऑल्सो गोइंग टू एक्सेप्ट द स्टेट मगर विद द प्रोबेबिलिटी, and the probability is defined by this formula e to the power delta et, and as you will see okay, this probability will decrease with time. So how would you select make this decision? So let's suppose जनाब के the value of this function is given is this thing, so delta e by t. So again this delta is going to be negative, remember, because the next value is less than the current value. Okay, let's store this value in k. So what you're going to do, you're going to generate a random number between 0 and 1, let's say p. If the p is less than k, then you're going to accept current state is going to be the next state. Otherwise you're going to ignore it, else do nothing, else ignore. ठीक है, तो हो गया ये जनाब के ये प्रोबेबिलिटी ऐसे तो कम होती रहेगी, एंड द प्रोबेबिलिटी एंड द चांस कि जनाब जो रैंडम नंबर आप जनरेट करेंगे वो लेस देन वो कैसे भी कम होता रहेगा. तो आपकी जो वैल्यूज हैं टेम्परेचर की, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द वैल्यू जब आपका टेम्परेचर हाई होगा, देन यू विल हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिंग बैड मूव. जब आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा देन यू विल हैव लेस चांसेस ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड मूव, एंड दिस इज गोइंग टू बी
this works like a magic. ठीक है? If you follow this thing, then you can eventually prove कि अगर आप आसानी आहिस्ता 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 टी को डिक्रीज करेंगे हम टेम्परेचर को, देन यू विल फाइंड द ग्लोबल ऑप्टिमम विद probability that is about 1, and with certainty you're going to find the global optimum, and this is something which is wonderful as far as simulated annealing is concerned. ठीक है? तो अगेन बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिमुलेटेड एनालिटिक्स को यूज करती हैं, इसके अंदर VLSI लेआउट्स हैं, लैंड स्केड्यूलिंग एंड many other प्रॉब्लम जो कि लार्ज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो कि सिमुलेटेड एनालिटिक्स को यूज करती हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. So let me show you a small demo of how simulated annealing works. So here in front of you is a scheduling problem. So the constraints are K should not be equal to B, A should be less than D, and D should be less than C, and E should not be equal to C, and B should be greater than, so E should be greater than B, and E should not equal to D. So we have to assign these values from A to B, C, and D. Let's suppose there are time steps or time slots that you can assign to certain teachers, and the constraints are जनाब के जो कोर्स ए है वो कोर्स डी से पहले ऑफर होना चाहिए, कोर्स डी कोर्स सी से पहले ऑफर होना चाहिए, कोर्स ई और कोर्स डी एक साथ ऑफर नहीं हो सकते, कोर्स ई कोर्स बी के बाद में ऑफर होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और सी और ई जो है वो भी एक साथ ऑफर नहीं हो सकते. तो कैन वी टू सॉल्व दिस थिंग यूजिंग लेट्स सपोज सिमुलेटेड एनालिटिक्स. So we initialize again as always local search को हमेशा initialize करेंगे with some random values, and you when you initialize you will find कि जना के बहुत सारी चीजें, again we will reinitialize it. तो again reinitialize with some values यहाँ पे ज़्यादा missing है. So if you take a step, so you will see जनाब के I will have selected a value and the values are changing. So again it might not be obvious कि जनाब किस तरह से काम कर रहा है, but it is also taking a random downward value. So if we solve it, so you can see the structure. So again it looks like an easy problem to solve, but it's not an easy problem to solve at all, computationally speaking, by the way. So if you'll run hill climbing on it, you will find now it's very difficult to find a solution because of the constraints जो exist करते हैं. So eventually we'll see जनाब के we'll let it run. So this is, you can see the hill climb, this is not hill climb, is simulated annealing, but the plot is given hill climbing. You can see the जनाब के कहाँ पे करंट स्टेट जो है वो हम यूज करें. यू कैन सी जनाब को जो नीचे जो वैल्यूज आ रही हैं हम ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट ऑलवेज मूविंग डाउन अपवर्ड्स, वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स एज वेल. ये जो जितनी भी आपने नीचे देख रहे हैं, सो ये तमाम चीजें जो हैं वो दिखा रही हैं कि आप डाउनवर्ड स्टेप्स चले. तो लेट मी री इनिशियलाइज इट. Initial state, and you can see this is a downward move. या upward move, then again downward move. तो जितनी you can see जनाब कोई downward move हम शुरू में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पर जैसे जैसे टाइम स्टेप बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज टेम्परेचर वैल्यू कम होती रहेगी, वैसे the probability of setting a downward will be going down. You can see the downward move that we are taking. It's a very good state that we have, but we are taking the bad move. The probability is different. Again, we cannot be sure कब लेंगे कब नहीं लेंगे, but the probability will will decide कि जनाब क्या आपकी जो है. You can see जनाब it's, despite the fact it's a very looking like a very small problem, it's very difficult to solve. The number of conflicts are showing you now इतने ज़्यादा conflicts हैं, उतने ज़्यादा आपको. So again we have stopped at 100 time steps. We could have increased to more time steps, but हमें यहाँ पे दिखाना पड़ा. ठीक है? So let's very quickly look into a couple of other algorithms as well. The one algorithm that we use called the local beam search. Local beam search को समझ लें जनाब के it's multiple hill climbing running at the same time. ठीक है? तो instead of just keeping track of one state, you keep track of k states. ठीक है? तो you start with k randomly states और k steps के successes को आप तलाश कर लेते हैं, and then you select the k best successes and repeat the process. ठीक है? So it's basically
it is like you are running k different hill climbings and you combining the results. तो अगर आप समझ लीजिए ना, आपके बजाय कि कोई एक आदमी तलाश कर रहा है, 5 लोग डिफरेंट लोग तलाश कर रहे हैं, और जब किसी को कोई लगता है कि वो सोल्यूशन नहीं करी पहुंचेगा, सबको अपने पास बुला लेता है कि जनाब यहाँ सर्च करते हैं, यहाँ अच्छे तरीके का, यहाँ में ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इसको कर यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए। सबसे अच्छी बात ये जनाब कि वी कैन रन these k things into parallel and this because of this massive parallel architecture that we have right now, we can afford to run these things in parallel and have a very good outcome that we have. Okay. So again, we can talk about you can look up into local beam search as a potential replacement for hill climbing as well. Yeah. Now let me very quickly talk about genetic algorithms as well. So genetic algorithms का basically idea ये है कि जनाब कि they take inspirations from our natural जिस तरह से हम समझते हैं कि हमारी evolution हुई है, हमारी physical evolution हुई है, उससे basically थोड़ी सी ये inspiration जो है वो लेती है। Idea is जनाब कि we all have our DNA and so so when we combine to produce an offspring, then we share part of our DNA with that offspring. ठीक है, तो हमारे जो offsprings हैं किसी भी species के, उनके जो उसका जो डीएनए है, इट कंबाइन द डीएनए ऑफ देयर पेरेंट्स. तो इफ देयर द पेरेंट्स आर स्ट्रांग, देन देयर ऑफस्प्रिंग्स डीएनए शुड आल्सो बी स्ट्रांग. ओके, तो ये कुछ जनरल आइडिया है इसका, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इफ यू वांट टू summarize genetic algorithms in a single sentence. Okay, so again what we do, we start with k randomly generated populations are just gene है. For example, अगर ये 8 queen problem है, इसका डीएनए को इस तरह से, queen 1 की पोजीशन क्या है, तो queen 1 is 8, queen 2 is 3, queen 3 is 7, queen 4 is 4, queen 5 is 2, queen 6 is 5, queen 7 is 1, and queen 8 is 6. So this is the general DNA of a population. This P1 कह लेते हैं इसको. So we generate these n populations, random populations. Okay, and then we evaluate के जनाब के ये population की वैल्यू, फिटनेस वैल्यू क्या है. अगेन लेट सपोज, और फिटनेस वैल्यू क्या है बेसिकली, हम दिस वी evaluate के बेसिकली कि ये इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या वैल्यू देता है. लेट्स सपोज कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 20 थी. I'm just randomly assigning values to it. ठीक है, सो 20 वैल्यू थी, इसकी 21 वैल्यू थी, मे बी के नंबर ऑफ अटैकिंग क्वींस ले लीजिए, या नंबर ऑफ नॉट अटैकिंग क्वींस जो कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको आप ले लीजिए, जो आपको देना चाहे. लेट्स सपोज कि बिकॉज for clarity purposes we are taking a maximization problem and we will consider the number of non-attacking queens. जितनी ज़्यादा non-attacking queens होंगी उतना बेहतर हमारा solution जो है वो exist करेगा. तो once we have this solution, we are going to select the better solutions. वो population select कर लेंगे जो कि बेहतर है, and then you would apply these natural operators, the selection, the crossover and mutation. Let's see how. So selection क्या है basically, let's suppose in this was your initial population. So we calculate their fitness values 24, 23, 20, 20 and 21. How does these percentage come about? Basically आपने कहा जनाब कि you add up all these values 24, 23, 20 and 11 and it's combined to 24 plus 23 is 47, 67 and 78. And then you divide 24 by 78. Divide 24 by 78 is about 31%. And divide 23 by 78 is about 29%, so on and so forth. And then you select it, maybe the 2 or the top 3 depending कि जनाब आप क्या करना चाहते हैं. And then you make a selection of pairs. जनाब let's say कि ये P1 था, ये P2 था, ये P3 था as population और individuals. तो आपने P1 को select कर लिया, P2 से कंपेयर मैचअप करने के लिए, और P2 को सिलेक्ट किया आपने P3 के साथ क्रॉस ओवर करने के लिए, सिलेक्ट कर लिया आपने. तो यू मेक दिस पेयर्स, तो ये आपके पेरेंट्स बन गए. ठीक है, एंड यू अप्लाई ऑपरेशन कॉल्ड क्रॉस ओवर. क्रॉस ओवर क्या होता है बेसिकली कि आपको एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे अपने पेरेंट्स में से. तो ये P1 का लेकर तो कहते हैं P1A और ये P1B बन गया, जैसे ये P2A बन गया और ये P2B बन गया. ठीक है, और फिर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा जनाब कि इसका पहला हिस्सा आएगा P1A से, और दूसरा हिस्सा आएगा P2B से, और दूसरे चिल्ड्रन का पहला हिस्सा आएगा P2A से, और दूसरा हिस्सा आएगा P1B से. एंड देन यू हैव दिस क्रॉसओवर between the children. ठीक है, पेरेंट्स डीएनए. ठीक है, once we have this crossover population, फिर हम क्या करेंगे जनाब कि we have a perform operation called mutation. Mutation क्या है जनाब, you will select
entry at random. So let's suppose this entry at random, and you will going to change its value to a random value. Let's say random value मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, it's not random, but we have these heuristics to select the best value. We talk about this thing when we talk about constraint satisfaction problem. Next, ठीक है. So we're going to select a value, and then based अच्छा maybe क्या मैं कोई भी value मैं कोई भी mutation नहीं करता, and then we will have a new population. You will repeat the process unless and until we are finding a better solution. Okay, so again, this is a more graphical representation of what mutation and what crossover looking like. So take a moment, look at this video and see how it works. So basically, genetic algorithms जो हैं, they have an uphill tendency with random exploration. Exploration वाला जनाब के they are trying to find out solution जो कि maybe ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसके बावजूद भी try करें ताकि बेहतर information जो है उनको मिल सके. सबसे अच्छी बात ये जनाब कि we can run this thing on parallel in multiple threads, and that's why they have this massive application over these problems area. ठीक है जी. So just let's take a very brief look at this genetic algorithm. So you have this population and the fitness function, and this is definitely different for different problems. NQueen के लिए अलग होगा, pseudo के लिए अलग होगा, and so on and so forth. Okay, and then you randomly select your population, and then you reproduce by having a crossover, and then you mutate with a small probability. तो the probability है अगर maybe you will mutate, maybe you will not mutate. अगर mutate होगा तो you will change a bit, otherwise you won't change anything. You will iterate your new population, repeat the process and listen until you are getting the best. And this is also cool. I would recommend you to try to implement this thing on your own to figure out जनाब how these things work. ठीक है, चलें जी, यहाँ तक इसको रोकते हैं. Next video में जनाब we will talk about the searching with partial information. Thank you.